Dear student, today we are going to discuss active and passive voice. Before understanding active and passive voice and narrations, we will know about tenses because without proper understanding of tenses, voices and narration cannot be converted. It means we cannot convert active to passive voice or direct to indirect when there is no understanding of tenses. So let us first discuss about tenses. We have 12 tenses as all these tenses are shown in the table. In the table, first there is present indefinite tense, then present continuous tense, then present perfect and present perfect continuous tense. We have four perfect in present tenses. Then we have past indefinite, past continuous, past perfect and past perfect continuous tense, and future indefinite, future continuous, future perfect and future perfect continuous tense. So this table shows 12 tenses. In all the tenses we ought to understand which helping verbs and verbs are used in these tenses, because before understanding tenses, voices and narration, we should know what type of or what helping verbs or verbs are used in the sentences. Without proper understanding of tenses, voices and narration cannot be done. So in first tense, that is present indefinite tense, we mean form of the verb, and H we mean helping verb. In present indefinite tense, we use first form of the verb and first form plus s or es, and helping verb do or does. In negative sentences, we use do not or does not, and as well as in interrogative sentences. So in present indefinite tense, first form and sometimes first form plus s or es, do or does is used, and present continuous tense helping verb is mr and first form plus ing. That is the identification of a present continuous tense. And in present perfect, helping verb has or have plus third form is used. And in present perfect continuous tense, helping verb has been, have been and first form plus ing is used along with since or for. Since is used for point of time and for is used for period of time. Since means since we can use since for in the morning, in the evening, 9 o'clock or any time. It means time of watch, time of calendar, we can use since. And for is used for period of time, means for some time, for 3 years, for 4 years, for 5 years, for 10 seconds. So for is used. And then past indefinite tense, we use helping verb second form, we use second form or helping verb did is used. After did, first form is used. So when there is in any sentence, when there is second form or did plus first form, it means that sentence is from past indefinite tense. In past continuous, was were plus first form plus ing, and past perfect had plus third form, and past perfect continuous had been plus first form plus ing along with since or for. Future indefinite, in future indefinite, helping with shall will plus first form is used. Future continuous, shall be, will be plus first form plus ing is used. And future perfect continuous tense, shall have, will have plus third form, and future perfect continuous tense, shall have been, will have been plus first form plus ing along with since or for. So these are the helping verbs of all the 12 tenses. So before starting or converting active to passive or from changing direct to indirect, we must know which tense is used in the sentence of active voice or which tense is used in the sentence of narration. So we should know. So in this table, it is marked, we have 12 tenses
And 12 tenses in every box, each box is divided in two parts. So first we see present indefinite tense. Helping verb first form, verb first form plus SOS, helping to orders, and in the partition there is PV is written, that is circle in one. PV mean passive voice. So if there is sentence of active voice and in that sentence present indefinite tense is used, that it means first form is used, first form plus SOS is used, do or does is used. So in converting passive voice we can use the helping verb of present continuous tense and verb third form. So in passive voice we always use third form. So when we change the sentence from active voice to passive voice in present indefinite tense we use helping verb of next tense, that is MR plus third form. And past indefinite we can take the helping of next tense. In past indefinite we can use the helping of present past continuous tense, was were plus first form plus third form. In future indefinite tense we use helping of a future continuous tense, that is shall be, will be plus a third form. So first the circle one, in circle one, that is if we see, if we convert present indefinite into passive voice we use helping of is MR plus third form. In 2, that is circle, in circle 2, in present continuous tense in passive voice we use helping verb is being, am being, are being plus third form. And when there is sentence of present perfect in passive voice we use has been, have been plus a third form. And in past indefinite tense when there is second form or did plus first form we use helping verb in passive, P mean passive voice, was verb plus third form. In present continuous in passive voice we use was being, were being plus third form. In passive voice of past perfect we use had been plus third form. And passive voice of present perfect continuous tense and past perfect continuous do not change. Next, in future indefinite tense, for passive voice shall be, will be plus third form is used. And passive voice of future continuous tense is not changed. In future perfect we use shall have been, will have been plus third form, and passive voice of future perfect continuous remain unchanged. So in all the 12 tenses passive voice of 8 tenses are changed from active to passive, not 4 tenses. So rule 1, for passive voice we must know which tense is used in active voice, that is the sentence that is written under the table. Rule 1, in P mean in passive voice we always use third form. Second rule, if sentence of active voice is interrogative then the sentence of passive voice will be interrogative. It means यदि active voice का वाक्य प्रश्नवाचक है तो passive voice का वाक्य भी interrogative ही होगा. And rule 3, subject is changed into object and vice versa. Vice versa mean subject is changed into object and object is changed into object. Subject का object और object को subject बनाते हैं. जैसे I is changed into me, we is changed into us, you, he, him, she is changed into her, it, they, them. क्या हो गया? होने दे फिर, क्या काम कर रहे बेटा मैं भी और उठना किया अपन लाइट लाइट थोड़ी देर में लाइट गई होगी फिर क्यों टेंशन लेगा, मैं ना डिस्टर्ब ना करो बे. On page 2 we will solve the examples of 8 tenses from which active voice is converted into passive voice. First is present indefinite tense. It means in passive voice we use is MR plus third form. First sentence, she manages the house. The house is managed by
her. Why do you tell a lie? It means this is interrogative sentence. If sentence of active voice is interrogative, then the sentence of passive voice will remain interrogative. Why हम पहले यूज करते हैं. Why do you tell a lie? A lie is subject. So why is a lie told by you? Again sign of interrogation. Present continuous tense in passive voice is being, am being plus are being plus third form is used. He is running a race. Now subject is a race. Is being run by him. Are you singing a song? Are is with this is interrogative sentence, and the subject is a song. Song means singular, so we use is before the subject. Is a song sung by you. In all passive voice we always use third form. It is must. Third form is used when active to passive voice is converted. Present perfect tense. You have won a race. A race has been won by you. Has stolen your dress. Your dress is plural. So have your dress is been stolen by him. Again sign of interrogation. Past indefinite tense. In past indefinite tense in active voice we find second form or did plus first form. So it means sentence belongs to past indefinite. So in passive voice was verb plus third form is used. He stole a ball. Stole second form. It means past indefinite. So in passive voice was verb plus third form is used. A ball. A ball is singular subject. Was stolen by him. Did she run a great risk? A great risk is subject in passive voice. So a great risk is singular. So we use was before the subject because it is interrogative sentence. Was a great risk run by, she is converted to her. So in this way we can do practice of these 8 tenses. Now rule number 9. Passive voice of imperative sentences. Now the question is, what are the imperative sentences? Imperative sentences are those sentences which express order, command, request and advice. सो जिस सेंटेंस में आदेश दिया गया है, रिक्वेस्ट की गई है या कोई सलाह दी गई, वो इम्पेरेटिव होते हैं. उनको रूल चेंज करने के लिए, एक्टिव टू पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास 2 रूल होते हैं. एवरी सेंटेंस कैन बी चेंज फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस बाय 2 वेज. जैसे किसी सेंटेंस में ऑर्डर है तो हम लिखेंगे यू आर ऑर्डर टू. अगर सेंटेंस में रिक्वेस्ट है यू आर रिक्वेस्टेड टू. और एडवाइस दे रखी है, कुछ सलाह है, तो यू आर एडवाइज टू. या एक 4th रूल ये मेंशन किया हुआ है, लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म. लेकिन ध्यान रखें, जब हम यू आर ऑर्डर टू करते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर एडवाइज टू, इस टू के तुरंत बाद जस्ट आफ्टर फर्स्ट फॉर्म इज यूज्ड. फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड. एग्जाम्पल ए, टाइप दिस लेटर. सो टाइप दिस लेटर, ये सेंटेंस रिक्वेस्ट भी हो सकती है, ऑर्डर भी हो सकता है. जब अनसर्टेनिटी होती है कि ये रिक्वेस्ट है, डाउट है, तो अगर ऑर्डर है तो हम यू आर ऑर्डर टू टाइप दिस लेटर. अगर रिक्वेस्ट है यू आर रिक्वेस्टेड टू टाइप दिस लेटर. लेकिन जब डाउट होता है कि भी इसमें रिक्वेस्ट है, ऑर्डर है, तो हम क्या कर सकते हैं, लेट से करेंगे. तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेट टाइप दिस लेटर. दिस लेटर क्या, सब्जेक्ट. अब लेट के बाद क्या, लेट प्लस सब्जेक्ट. रूल 4th में लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म. तो लेट, अब सब्जेक्ट दिस लेटर, लेट दिस लेटर, बी का यूज करेंगे और बी के बाद थर्ड फॉर्म. थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म आती है. लेट प्लस लेट दिस लेटर बी टाइप्ड. प्लीज़ हेल्प मी. प्लीज़ है तो ऑटोमेटिक इसमें रिक्वेस्ट यूज शो की गई है, तो लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू. अपनी तरफ से लगाएंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू. अब टू आती है, हम उसमें वर्ब फर्स्ट हम तो वर्ब यूज करेंगे, तो प्लीज़ इसमें यहाँ से प्लीज़ का यूज़ नहीं होगा,
ओनली हेल्प बच के हमारे पास हेल्प मी, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। वर्क हार्ड, इसमें आपको एडवाइस दिया गया है, सलाह। वर्क हार्ड, यू आर एडवाइज टू वर्क हार्ड, एज इट लिख देंगे। स्टैंड अप ऑन द बेंच, अब ये ऑर्डर है, स्टैंड अप ऑन द बेंच, परहैप्स इट इज सेड बाय टीचर। यू आर ऑर्डर टू, अब टू के बाद वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, यू आर ऑर्डर टू स्टैंड अप ऑन द बेंच। अब एग्जाम्पल ई, डोंट इन्फॉर्म द पुलिस, अब इसमें क्या है, रिक्वेस्ट भी हो सकती है डोंट इन्फॉर्म द पुलिस, या सिंपल भी हो सकता है। अब सिंपल में क्या है, लेट प्लस वो रूल नंबर 4 तो ऊपर मेंशन किया, जो लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म, तो लेट, अब द पुलिस सब्जेक्ट, लेट द पुलिस, अब नोट पे लगेगा नोट बी इन्फॉर्म्ड, ये इसमें रिक्वेस्ट भी हो सकती है या एडवाइज्ड भी हो सकता है, आपको भाई पुलिस को नहीं बुलाना, यू आर एडवाइज्ड। अब ये ना डोंट इन्फॉर्म द पुलिस, अब एडवाइज वर्ड में क्या है, यू आर एडवाइज टू, लेकिन जब नोट आएगा तो नोट इज यूज्ड जस्ट बिफोर टू, टू की बात तो वो आपकी फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगी, यू आर एडवाइज नोट इन्फॉर्म द पुलिस। सो दीज आर द रूल ऑफ चेंज फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। नाउ रूल नंबर 10, चेंज ऑफ वॉइस इन द इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव हमारे 3 होते, टू इन्फिनेटिव, बेर इन्फिनेटिव और जेड, लेकिन हम ज़्यादा डिटेल में न जाने के बजाय इसमें यही ध्यान रखना हमने डियर स्टूडेंट्स कि सेंटेंस में आपको जब एक्टिव वॉइस का सेंटेंस होगा उसमें आपको टू के बाद फर्स्ट फॉर्म मिलेगी, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म मिलेगी, तो समझ लेना कि वो हमारे इन्फिनेटिव के सेंटेंस है। अब एक ही ध्यान रखना, हमने पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म आएगी, सब्जेक्ट इज चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट, वो कॉमन रूल है। अब टू के बाद जो फर्स्ट फॉर्म आई है, हम क्या करना है, टू प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म लगा देंगे, जैसे यू विल हैव टू डू इट, यू विल हैव टू डू, तो टू डू जो अंडरलाइन किया गया, ये क्या है, इसमें इन्फिनेटिव यूज किया गया यहाँ पे, तो रूल क्या है, टू प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म। अब इसका पैसिव वॉइस में क्या करना है, यू विल हैव टू डू, इट हमारा सब्जेक्ट है, अब ऑब्जेक्ट से क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट है, इट विल हैव एज इट इज हो गया। अब टू डू इट का टू बी डन, यू का हो जाएगा बाई यू, इट विल हैव टू बी डन बाई यू। या इसके बाद दूसरे में कुछ सेंटेंसेस होते हैं, जैसे सेंटेंसेस स्टार्ट विद इट इज़ टाइम, बोलते हैं जैसे इट इज़ टाइम वाला वाक्य, उनका पैसिव वॉइस कैसे करना हमने, रूल 1 उसमें क्या करना है, इट इज़ टाइम एक्टिव वॉइस के शुरू में मिलेगा आपको, और पैसिव वॉइस में आपको इट इज़ टाइम ही रखना है सेंटेंस के स्टार्ट में, इट इज़ टाइम। फिर क्या करना हमने, अपनी तरफ से 4 लगाना है, फिर जो ऑब्जेक्ट उसको सब्जेक्ट में कन्वर्ट करके यूज़ करना है, इट इज़ टाइम प्लस 4 प्लस सब्जेक्ट प्लस 2 प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म। तो एग्जाम्पल ए, इट इज़ टाइम टू कॉल द रोल, इन पैसिव वॉइस इट इज़ टाइम, उसके बाद क्या यूज़ करना है, जिस रूल में था आपका 4 के बाद क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसमें क्या है, द रोल, जो इसमें ऑब्जेक्ट था, अभी क्या बन गया, सब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया, इट इज़ टाइम फॉर द रोल। अब हमारे क्या पास बच गया, क्या टू कॉल, अब जो टू बी कॉल्ड, सो इट इज़ टाइम फॉर द रोल टू बी कॉल्ड। सो दीज आर द रूल्स ऑफ चेंज ऑफ वॉइस इन इन्फिनेटिव सेंटेंसेज। नेक्स्ट इज रूल नंबर 11, पैसिव वॉइस ऑफ मॉडल्स। अब मॉडल के रूल काफ़ी ईजी हैं। मॉडल में क्या करना है कि मॉडल प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म, ये हमारा रूल है, मॉडल प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म, कैन स्पीक, कैन मॉडल है, स्पीक तो रूल क्या है, मॉडल प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म, तो कैन स्पीक का कैन बी स्पोकन, ought to done, ought to be done. And now comes to rule number 12, passive voice other than by preposition। अब तक हमें आपको ये बताया गया था अभी, when we convert sentence from active voice to passive voice, by is used, but in these sentences by is not used। फर्स्ट सेंटेंस, दीज आर द एक्सेप्शंस, ये अपवाद वाले सेंटेंसेज हैं जिनमें बाई का यूज नहीं होगा, बाई की इन एडिशन टू अदर हेल्प अदर प्रीपोजिशन यूज होती है इसके अंदर। सी नोज मी, वैसे सेंटेंस क्या है, सी नोज मी प्रेजेंट इंडेफिनिट है,
इन पैसिव वॉइस क्या यूज करेंगे हम, इज हमारे प्लस थर्ड फॉर्म, शी नोज मी का होगा आई एम नोन, नोट बाय हर नहीं, नोट आई एम नोन टू हर, तो नोन के बाद टू आता, आई एम नोन टू हर। दिस टम्बलर कंटेन्स वाटर, अब सब्जेक्ट हमारा क्या है वाटर, देखो दिस टम्बलर कंटेन्स वाटर, कंटेन्स है फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और एस, इट मीन्स इस सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज हुआ है। वाटर इज कंटेन्ड इन दिस टम्बलर, थर्ड फॉर्म हमेशा आएगी, कंटेंट इन हो गया, नोट बाय दिस टम्बलर नहीं आएगा। हिज बिहेवियर सरप्राइज्ड मी, हिज बिहेवियर सरप्राइज्ड, पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज हुआ है इसके अंदर, पास्ट इंडेफिनिट, सो इसके पैसिव किसका यूज करेंगे, वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म, मी का होगा आई वॉज सरप्राइज्ड एट, नोट बाई, आई वॉज सरप्राइज्ड एट हिज बिहेवियर। डी, द रेसिटेशन प्लीज्ड द इंस्पेक्टर, द रेसिटेशन प्लीज्ड सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट अगेन, वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म इन पैसिव वॉइस। सब्जेक्ट हमारा कन्वर्ट कर द इंस्पेक्टर, द इंस्पेक्टर सिंगुलर है, वॉज, अगर इंस्पेक्टर मोर देन वन इंस्पेक्टर्स हैं देन वर यूज होगा। द इंस्पेक्टर वॉज प्लीज्ड विद द रेसिटेशन। सो डियर स्टूडेंट्स, अब आपका ये टॉपिक वॉइसेस का कंप्लीट हुआ, एंड नेक्स्ट चैप्टर वी विल डिस्कस नरेशन, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। थैंक्स।